श्री कृष्णा विश्वविद्यालय परिसर में आज एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये संगोष्ठी इंटरनेशनल संगोष्ठी थी और इसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। कृष्णा विश्वविद्यालय के सभागार में पर्यटन स्थलों के विकास और उसमें रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भूमिका पर कई लोगों ने अपने वक्तव्य रखे और इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रहे ब्रिटेन से आए चेयर ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज्म इन डेस्टिनेशन लंदन के हेरोल्ड गुडविन, जो कि अन्य कई संस्थाओं से भी जुड़े हैं और पूरे विश्व भर में डेस्टिनेशन टूरिज्म को बढ़ावा देने की पूरे विश्व भर में कार्य कर रहे हैं। और आज वो छतरपुर के श्री कृष्ण विश्वविद्यालय में आए हैं। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म की भूमिका बहुत वृहद है। एक साझा गतिविधि है जिसमें ट्रैवलर डेस्टिनेशन और उस डेस्टिनेशन के आसपास के समाज को शामिल किया जाता है। किसी डेस्टिनेशन को विकसित करने के लिए वहाँ के समाज को साथ लेकर चलना बहुत ही ज़रूरी है और इसे ही रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म कहते हैं। हमारे बुंदेलखंड के ग्रामीण परिदृश्य को विविधता और उसके संरक्षण व संवर्धन के लिए ज़रूरी ये है। दूसरे शब्दों में अगर समझें तो पर्यावरण, समाज, संस्कृति और इसके संवर्धन के साथ उसके मूल स्वरूप को बिना नुकसान पहुंचाए पर्यटन को विकसित करना ही जिम्मेदारी पूर्वक किया गया कार्य डेस्टिनेशन टूरिज्म कहलाता है, जिसे रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म भी कहते हैं। और इससे उस शहर और आसपास के इलाकों में विकास और व्यापार भी बढ़ता है, क्योंकि इसमें सामान्य लोगों और उनके व्यापारों को भी साथ में लिया जाता है। इस कार्यक्रम में कई अन्य विदेशी मेहमानों ने भी शिरकत की, जिसमें मुख्य रूप से फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रांस फ्रंटाइल पार्क डेस्टिनेशन केप टाउन साउथ अफ्रीका के जिलेन ओलेरी, एसोसिएट मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म गैम्बिया साउथ अफ्रीका के आदामा बाह, फाउंडर जेंडर रिस्पॉन्सिबल एसोसिएशन लंदन यूनाइटेड किंगडम के आया पेटीमोनेट, फाउंडर ऑफ हैलीडेयस इन रूरल इंडिया से फ्रांस की लूसी सोफिया हर्टमैन व कई विदेशी चेहरे शामिल हुए, जिन्होंने रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म और डेस्टिनेशन टूरिज्म में काफ़ी लंबे समय से अपना सहयोग दिया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम, चेयरमैन डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह गौतम, कुलपति डॉक्टर अनिल कुमार धगट, उप कुलपति डॉक्टर गिरीश त्रिपाठी समेत अन्य कई मेहमान व विश्वविद्यालय के अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। ये गोष्ठी लगभग 1 घंटे तक चली और कई विविधताओं के साथ कैसे डेस्टिनेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को बढ़ाया जाए, इस पर खुली चर्चा हुई। मीडिया से बात करते हुए मिस्टर गुडविन ने बताया कि मध्य प्रदेश इस समय डेस्टिनेशन टूरिज्म और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के मामले में दूसरे नंबर पर है और पहले नंबर पर केरला है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक अच्छा संकेत है और आगे काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर डेस्टिनेशन टूरिज्म को विकसित किया जा सकता है। Districts in Madhya Pradesh, Chhatarpur, Panna and all. I think the same thing that I think about the culture in most parts of India. For someone from outside who's not been brought up here, who doesn't understand the history of Hinduism, who's unfamiliar with the major texts, it's almost impenetrable. And one of the things that needs to happen in India is you will understand it as a very drummed down version of the history of your myths and your legends and your religion, but we need something which enables the tourists to begin to understand the relationship between the different legends, the different religious leaders and their relationship one to another. It's very hard for a foreigner to get to grips with that without a fundamental understanding of the culture of the place. I've seen in the 2 weeks I've been here, I must have seen 30 different kinds of music performed live, but I'm going away having enjoyed it but having not understood it. I think that's the next big challenge for places like universities, to help people to understand what it is that they're seeing, so that they don't just enjoy it as a spectacle but understand something more of what it's trying to communicate, what it means in the culture. This gentleman is asking, what did you say about this university? Sorry? About some words for university.
Oh, about the university. I'm excited to see a new university like this. It's always a pleasure to visit a university and to meet with the students. And I'm sure that there's a big agenda for action in the area, and I hope that the university will address some of these issues around tourism and culture, which are very critical to the future. I was also very pleased to see the way in which the question from the student was responded to. So thank you. Here is the development of the notion of it being safe for women travellers. More and more women are travelling alone, and they want to go to places where they feel safe. And the initiative here to introduce safe tourism for women is very important. The other thing which I think is really important about what's happening here is building tourism for the future. Building tourism which will create opportunities for people in rural areas, which will encourage young people to stay in those rural areas rather than move to the cities. So I think what's happening here is really exciting. I'm very optimistic about the future of tourism in Madhya Pradesh, but only if it keeps going in the direction it's going with the support of people like Dr. Minoji. So same question. We have a very diversified industry in the UK. 98% of the tourism industry in the UK is SMME, small, micro and medium-sized enterprises. So that's what needs to happen in India too, and it's happening. We've seen lots of good new accommodation becoming available, frankly much more ethnically interesting accommodation that we visited during this stay, and I think that's the maturity of the destination. And also, as I answered the question before, the growth in the domestic tourism is a very important part of that. People valuing visiting other parts of their own country is a big part of the development of great impression to the earnings of the localites. That's the whole point. The whole strategy is to create opportunities for people from the local community to be earning from tourism. And that's beginning to happen here in a big way, through craft, through guiding, through experiences, through the homestays. It's a very exciting time, I think, in Madhya Pradesh's tourism. I was here in Kerala, I was here in Madhya Pradesh 25 years ago, and we visited Khajuraho, and that's all we saw of Madhya Pradesh. So you have a major international honeypot destination. What's happening now is that tourism in Madhya Pradesh is maturing, and people have understood that local communities need to benefit from tourism. It cannot just be the hotels and the resorts. It must also be the communities who live in the area that gets the visitors. And what the Madhya Pradesh Tourism Board is doing through Dr. Minoji is to develop forms of tourism which benefit local communities and encourage tourists to stay longer. We flew into Khajuraho and we flew out 20 years ago. They come and they spend 2, 3, 4, 5 nights here, increasing the benefit to the private sector and increasing the benefit to local communities through